Hi, so this is on the weekend of 25th. So let's do a quick analysis of all the FNO counters which we have. मैंने पहले ही ICICI बैंक और रिलायंस और ITC का मेरा जो व्यू है आफ्टर रिजल्ट्स वो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ. सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू एंड ऑल्सो हैव पोस्टेड एक्सप्लिसिटली वीडियो ऑन ICICI बैंक चार्ट एनालिसिस एंड रिलायंस. ऑफ कोर्स दिस इज हाउ आई सी इट and this is something which is my personal view, so if you don't agree with it, I totally agree, because market is supreme, or it's only on the Monday we will get to see of how the stock moves from here. Okay, so in general this video we are going to talk about जो भी trending stocks है और जो भी अच्छे ट्रेड्स फॉर द नेक्स्ट वीक हम ले सकते हैं. हम उसका एनालिसिस, वेरी क्विक एनालिसिस करेंगे. और आपको अपर राइट हैंड कॉर्नर में एक वीडियो मिलेगी जहाँ पे मैं एक कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स जिसमें वीकनेस है और जो बहुत अच्छे रिवर्सल कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया है. और देयर आर पर्टिकुलरली टू मेन सेक्टर्स जिसमें ये फ्लेवर दिख रही है. वो वीडियो आपको अपर राइट हैंड कॉर्नर में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो. एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द कंपनीज आई हैव डिस्कस्ड ओवर हियर. सो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी काउंटर्स हैं जिसमें वीकनेस इन द लास्ट सेशन ऑन फ्राइडे बनी, और हम ये भी देखेंगे कि कौन सी काउंटर्स में पोजीशंस अच्छी बन रही हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड दे मे गिव अस अ वेरी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी. मैंने एक BTST का भी वीडियो किया था जहाँ पे मैंने टाटा कंज्यूमर को डिस्कस किया था. सो बेसिकली यू नो ट्राई टू लुक इनटू ऑल ऑफ दीज वीडियोस बिकॉज आई वोंट कवर द डिटेल्स जो मैं पहले वीडियो में किया हूँ, और अगर किया भी तो बहुत संक्षेप में करूँगा. सो ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग यू शुड बी सीइंग दोज वीडियोस. सो क्विकली लेट्स डू अ क्विक एनालिसिस ऑफ. सो हियर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सो दिस इज़ बेसिकली द काउंटर्स जिसमें बहुत अच्छी ट्रेंड बन रही हैं और जो बहुत अच्छी मूव दे रही हैं. सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द कंपनीज जहाँ पे है. SBI लाइफ में रिजल्ट आने वाली है, बट बिफोर दैट इट गेव अ वेरी गुड मूव एंड वी हैव टू सी इफ इट्स एबल टू टेक आउट द ऑल टाइम हाई ऑफ 1064. ये 1050 में क्लोज हुई है. सो दिस इज़ वन ऑफ द काउंटर्स जहाँ पे पोजिशन बन रही है. ICICI बैंक में भी पोजिशन बन रही हैं. MFSL इट वेंट टूवर्ड्स न्यू ऑल टाइम हाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अपर लेवल्स में अच्छी सी सेलिंग आई एंड इट वाज नॉट एबल टू विस्टैंड 1100 लेवल्स. सो गोइंग फॉरवर्ड दिस माइट बी अ वेरी गुड काउंटर जहाँ पे मैं वीकनेस, अगर निफ्टी में वीकनेस आई, सो दिस काउंटर्स आर वेरी श्योर शॉर्ट काउंटर्स. और अगर यू नो इट्स एबल टू होल्ड 1100 लेवल्स, सो देन अगेन द अप मूव विल कंटिन्यू. सो नो मैटर वॉट, इसमें एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है. इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में हम देख रहे हैं कि दो द ट्रेंड इज गोइंग अप, is there's still weakness, and this is also true for Emphasis. भी अच्छी profit booking हुई है from all time high region. This was after it posted fantastic result over the on Thursday after market hours. So ये move उसकी थी. LALPATHLAB is also is a very strong trending stock, so definitely I would be keeping LALPATHLABs in my radar. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी strong move आई है. अभी हमको ये देखना है कि was it because of short covering or was it a real move and positions were added. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ACL Tech also is trying to reverse, and so after a huge sell-off, but I think this 1100 level will act like a resistance for now. So we have to see if it's able to take out 1100 levels. हमने ये ट्रेड लिया था लॉन्ग साइड एज वेल एज ऑन द शॉर्ट साइड, और ये हमने मार्केट वॉच में डिस्कस किए थे. Gujarat Gas is also forming a doji at higher levels. हमने इस दौरान ये ब्रेकआउट जब आई थी 700 के ऊपर हमने इसमें ट्रेड लिया था और ये 740 तक चली गई थी. So this was a good trade. Now we see that it's still getting in trend. So maybe Gujarat Gas is also one of the counters जो शायद एक दो दिन कुछ 700 के करीब आए, and maybe if it is able to get a support, so maybe new next the bull run will happen in Gujarat Gas. DLF भी एक अच्छी मूव दी. वी वे ट्रैकिंग BLF फ्रॉम 300 हियर. इस ब्रेकआउट रीजन से हमने ट्रेड लिया एंड नाउ इट हैज़ ऑलरेडी गिवन मोर देन 10% इन वेरी शॉर्ट स्विंग ट्रेड. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द काउंटर्स जहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे मूव करती है. मेट्रोपोलिस इज़ वन ऑफ द काउंटर्स जो बहुत दिनों से ये इट हैज़ बीन ट्राइंग टू गो अप, लेकिन इट्स अनेबल टू, एंड दिस वाज आफ्टर अ ड्रास्टिक सेल ऑफ विच हैपेंड.
सो ये एक बहुत अच्छी एक रिवर्सल कैंडिडेट है इन दैट सेंस दैट द वीकनेस इज ऑफ द ट्रेंड. ये जो डाउन ट्रेंड थी इसकी जो वीकनेस है ये धीरे धीरे कम हो रही है, बट वी हैव टू सी इफ इट इज़ एबल टू होल्ड दीज लेवल्स. अगर नहीं हुआ तो देयर कैन बी 2800 लेवल्स. इफ नॉट देन देयर कैन बी अ वेरी गुड शॉर्ट ट्रेड विच वी वुड बी इंटरेस्टेड टू टेक. आरती इंडस्ट्री भी एक बहुत अच्छी एक ब्रेकआउट दी above 880, and then theoretically you can see that it is very near 900. So I think this will be again a very good trade for us. AU Bank is also, it was since last 4-5 sessions ये नीचे आ रही थी, and now it seems like AU Bank is basically a very good candidate जहाँ पे हम लोग कुछ पोजीशंस देख सकते हैं. अगर ये 1200 का लेवल्स को क्रॉस की then definitely AU Bank is one of the banks जहाँ पे अच्छी मूव आ सकती है. एंड ऑल्सो इट्स ट्रू फॉर सन फार्मा. सन फार्मा का भी रिजल्ट नेक्स्ट वीक आने वाली है, एंड इट्स वेरी नियर 700. So and we can see that it's getting really the trend is getting stronger. So Sun Pharma is also one of the counters जहाँ पे अच्छी move आ रही है. BATAINDIA gave a very big red candle, and now you can see that it's trying to break the current candle, and it just took 2 sessions to come over here. हमने BATAINDIA को हमने ये ट्रेड लिया था, और उसके दूसरे वाले दिन हमने BTST में कवर किया था. एंड सो नाउ अगेन मे बी BATAINDIA इज ऑल्सो showcasing that either it can reverse. So try to keep 1670 as your stop loss or as a level to watch. और अगर वो break होती है, so we will be thinking about negative. Until unless that happens, we would be trying to see of a much move forward. हमने यहाँ पे एक इसको रिवर्सल कैंडिडेट में इसमें ये पोजीशंस बनाई थी अराउंड अबाउट 1570 से 1555. or exactly this is what happened, and it seems like BATAINDIA is definitely looking like a counter जो अभी अच्छी मूव दे सकती है. हमने UBL हेवल्स और मैकडॉवेल्स पे हमने वीडियो बनाई थी आफ्टर दिस मूव, और तब मैंने बोला था कि इट्स वेरी नियर इट्स मंथली रेजिस्टेंस, एंड सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड सिंस लास्ट 3-4 सेशंस. हम देख रहे हैं कि ये डिप हो रही है लेकिन स्टिल एबल टू मेंटेन the lower levels, and now I think UBL may be one of the counters Joe in the short term can give us a good move if it's able to move past 1450, because this is very near its monthly resistance. So ये आपको याद रखना चाहिए. टोरेंट फार्मा, वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स अबाउट टोरेंट फार्मा, ये मैंने ट्रेड भी किया था एंड मैंने ट्वीट भी किया था जब हम यहाँ पे थे, बिकॉज दिस वाज लाइक वेरी सी दिस वाज मोर ऑफ सपोर्ट रीजन, और यहाँ पे आके ये जो डोजी बनाई थी एंड देन सिंस लास्ट 2 सेशंस ये ऊपर जा रही है. सो इट्स अ वेरी नाइस ऑल टाइम हाई. सो डेफिनेटली आई वुड बी ट्रैकिंग टोरेंट फार्मा if it is able to take out this 3100 levels, क्योंकि पहले यहाँ से जाने के बाद you can see there were a lot of upper wicks and no down wicks, and then this was also a lot of upper wick, and then you can see now it's like it has changed, but it doesn't mean that Torrent Pharma will give a breakout on Monday itself, but no matter what, it's one of the stocks which should be in your radar. And this is also true for companies like ALKEM. So ALKEM has always been able to maintain this 3300 levels, and now and also say NAMDC. See, ALKEM और NAMDC की chart pattern कितनी same है, because they are always trying to maintain the 400 levels, say NAMDC, and this is also true for ALKEM for 3300. And now we are seeing that even if it moves up, the profit booking or selling comes, but it's still able to hold 400. So basically this showcases that people are actually buying in dip, and they are waiting for a more upper movement. And this is हमने जैसे UBL में देखा, ऐसे मैकडॉवेल में भी आप देख सकते हो. This was the day when we discussed that it's very near इस रेजिस्टेंस, और फिर 2 दिन के डाउनफॉल के बाद अभी भी लग रहा है कि ये अप मूवमेंट आ रही है. एंड दिस इज़ एक्चुअली गुड, बिकॉज आई थिंक मैकडॉवेल की भी रिजल्ट नेक्स्ट वीक आने वाली है. And Marico is in a box, but try to keep Marico because Marico की result आने वाली है. And City Union Bank we have already discussed. Page India, it seems like there is a very good a pole and then a flag, and now the upward movement has
has resumed, और मे बी इसमें और भी अच्छी मूव आने वाली है. कैनरा बैंक ये बहुत सारी सिंस 2nd of July आप देख रहे हो ये एक डाउन ट्रेंड में थी, एंड नाउ इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर रिवर्सल. एटलीस्ट ये जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, वो वीक हो रही है. सो दिस डजंट नेसेसरीली मीन कि रिवर्स करेगी. इट मीन्स कि जो भी शॉर्ट पोजिशंस थे, पीपल आर क्लोजिंग ऑफ. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर इंडियन होटल. यू कैन सी देयर वाज अ डाउनफॉल एंड देन देयर वाज नो फॉलो बाइंग, बट आई थिंक इंडियन होटल, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर is a very good candidate for shorting, but depending upon अभी जो COVID restrictions related जो random news आती रहती है, so basically these counters are actually reacting on those front. So you have to also take care of those things. So we have already discussed Kotak Bank, ALKEM. एक up move के बाद अभी हम देख रहे हैं कि कुछ profit booking आ रही है, and so we have to see how it moves from here. हमने और PI इंडस्ट्री भी it was a breakout and then it's a reversal and now it's trying to इसका जो 3000 levels पे इसका जो एक breakout आई थी, we traded this and the next day there was a huge sell off, and this was actually the all time high of 3300, and from there the next 2 days you can see there was a sell off, but there is again trying to consolidate, and so we have to see if it is able to take out the levels of 3130 अगर ब्रेक हुआ, और स्पेशली अगर 3200 ब्रेक हुआ, so basically PI इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी मूव आ सकती है. और सो दीज आर फ्यू ऑफ द कंपनीज. जैसे नेस्ले इंडिया हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट द रिवर्सल फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स, एंड ये पूरी वीक 4 दिन ये बहुत अच्छी एक मूव थी. तब वो 1750 1765 के आसपास थी, और अभी वो 1800 200 18,200 के पास है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ट्रेड्स, एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट कोफोर्ज इज ऑल्सो गोइंग अप. किसी ने मुझे जुबिलेंट फूड के बारे में बोला था, तो समवन डिड कमेंट, मैंने बोला था इस दिन. So someone did comment that people are moving out. So as I always say that of course people will book out, and of course there will be new people who will join in. So it's a matter, this is how market operates. लेकिन मेरा जो ट्रेंड एनालिसिस था वो इस दिन का, उस दिन वो बोला था कि the trend is still stronger, and so हमने पोजीशन बनाया, and here you can see that the next day we were able to make profit, and this is exactly the way the market works. So people are, someone has to be bullish for someone to be bearish. और यही मैं वो अभी मुझे नेस्ले देख के याद आया, क्योंकि द स्ट्रक्चर वी ऑल्सो टुक द सेम लॉजिक. हमने जो नेस्ले इंडिया में ट्रेड लिया था उसका भी लॉजिक यही था कि इवन दो इट हैज़ मूव्ड अ लॉट, बट द ट्रेंड वाज स्ट्रॉन्गर, एंड सो वी क्रिएटेड पोजीशंस, एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस वाज द रीज़न व्हाई वी एक्चुअली गॉट सम रियली गुड प्रॉफिट. So sorry, Nestle India as well as Coforge में भी मैं कुछ दिन पहले बोला था कि this is a strong trend, though I think it was on this day, and though there was a lot of sell off, and this is a very typical bearish pattern, but to see this is how the market moves, and because you see this trend is still stronger because it's not white, but इसका एक bluish tinge है, जिसका मतलब है मेरा सॉफ्टवेयर देख रहा है कि इसमें अभी भी ट्रेंड है, and maybe we have to see, maybe it will dip, and we will then eventually do a study, and then we will take our trades. और अभी दीपक नाइट्राइट भी एक बहुत अच्छी मेरी रेडार पे है since few days, and this is also true for आरती. और इन नवीन फ्लोरिन की रिजल्ट कल आने वाली है, सो आई वॉन्ट बी एक्चुअली, और मे बी इन द नेक्स्ट वीक इट विल कम, सो आई विल नॉट बी एक्चुअली ट्रेडिंग नवीन फ्लोरिन. और बट इन जनरल ये सेक्टर के बारे में हमने 2 दिन पहले मार्केट वॉच में सुबह में डिस्कस किया था, एंड स्पेशली आई मिस्ड आउट अ ट्रेड इन आरती इंडस्ट्री, जो मैंने तब बताया भी था, बट दैट ट्रेड, मिसिंग आउट ऑफ दैट ट्रेड वॉज, मेरे पास इतने ट्रेड्स थे कि मैं उसको मॉनिटर नहीं कर पाया, बट आई न्यू दैट द मूव विल कम, एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट हैपेंस. आरती इज राइट नाउ नियर 900 लेवल्स, और तब वो 840 850 रीजन में थी.
No matter what, this is how it looks like. REC Limited is looking like a very good candidate for a downward movement if it is not able to, so here पे जब भी ये ऊपर जा रही है इसमें is making a smaller candle. This is a very perfect example of a very good REC Limited is one of the best short trades that you can actually trade, and इसका this is a very typical chart pattern जहाँ पे is forming smaller candles. So you just have to have a watch of 152 levels. अगर 152 break हुई तो you can eventually see 150. So this will be a good 1% intraday. और अगर वो नहीं हुई, so it can even correct towards 145 levels. Power grid is also sort of trying to move past 235, but you can see that even though it's making higher low compared, but still there is a weakness, and we have to see अगर वो 235 cross की. So now we are towards the middle part of the quadrant. यहाँ पे ऐसी companies के होंगी जो generically weak है compared to the first quadrant जहाँ पे हम देखें. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बजाज पेंट sort of sell off after it made a good move, and this move was with Asian Paint results. So हाँ, ये बहुत अच्छी एक trade थी, but now it's trying to validate the breakout of 850 levels. So we will see how it comes from here. This is also true for IGL. एक downtrend में थी, and it seems like the trend is getting stronger. And so I wouldn't be surprised if IGL gives a breakdown. And so is सिप्ला भी हमने डिस्कस किया इसके पहले वीडियो में. HDFC भी यहाँ पे है. So and TCS also we discussed in the earlier video. Bajaj Finance is also after a good move, it's trying to consolidate. So let's see if it is able to hold the 6100 levels. This is, and Bajaj Auto हमने डिस्कस किया, is one of a very good reversal candidates. It has been in a downtrend. ये downfall आया after the 180 rupees dividend, and so after that this was a move of after the result. So we have to see if it is able to reverse from here. PNB is looking weaker, and so we have to, ये weak stocks हमने already discuss कर चुके हैं, so I'm not going to discuss it over here. NTPC में भी लग रहा है कि एक breakdown आएगी below 118 levels. So this is also one of good trades which can come out, क्योंकि इसका जो advantage होता है, you can see 122 is acting like a stiff resistance. So you can go ahead and sell the 122 call for safety, and also you can see that since last two sessions even 120 is acting like a resistance, so you can even go ahead and sell the 120 call, and this is a very good trades which you can take. Just last 4 दिन बाकी एक्सपायरी के, तो ये बहुत अच्छे ट्रेड्स होते हैं. हेवल्स ये जो गैप अप हुआ था ये अर्निंग की वजह से हुआ था, और नाउ हेवल्स इज ट्राइंग टू मेंटेन दिस. So Havels would definitely be in my tracker for if it is able to come towards 1100, and then a buying comes, and then we will see if it is able to move forward. हमने Havels पे last week हमने एक discussion किया था, where we discussed 4 companies, Havels, United Breweries, और United Spirits, McDowell जो है, और एक कंपनी थी, आई डोंट रिमेंबर, एम्फेसिस, एग्जैक्टली. सो ये चारों कंपनीज ने ही बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, एंड दे आर द मेड ऑल टाइम हाइज और 52 वीक हाइज. सो दिस वाज एक्चुअली समथिंग रियली गुड. सो इट वाज एक्चुअली नॉट अ टाइम वेस्टेड. क्यूएम्स इंडिया भी डाउन टर्न में है. एशियन पेंट्स भी आप देख रहे हो ये. सो एशियन पेंट्स इज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ वेरी गुड रिवर्सल कैंडिडेट फ्रॉम हियर. And I think going forward, अगर निफ्टी में कोई भी अगर strength आई, so I will definitely be going for Asian Paint. The reason is after making this big candle of after result, you can see that since last 2 days it has been trying to maintain this 3050 levels. यहाँ पर 3070 levels का जो एक था उसका breakout के बाद अभी ये is trying to reverse, and this is actually a very good candidate. Hindustan Unilever हमने already discuss किया था. This is a weak, and I think there is more weakness left in this counter. NMDC is also seems like a very good short candidate, and maybe going forward this is also going to give us a very good shorting trade. Here you can see that 180 levels were broken until after that it is trying to go past 180.
So this is also one LTI after a very good move. ये रिजल्ट के दिन वाली मूव थी, रिजल्ट के पहले, एंड देन आफ्टर दैट इट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग. सो आई थिंक 4500 levels should be achievable, and I have been tracking this as well as LTTS. ये दोनों कंपनीज जो हैं, एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक LTI would be a much better candidate compared to LTTS, and let's see how this turns out. Definitely हमारा stop loss already 4200 पे हो गई, and from there we will see how it goes. और हमने और अभी हम ABFRL देख सकते हैं. गेल इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी गुड शॉर्ट कैंडिडेट्स. यहाँ पे ये वीकनेस स्पेशली विद दिस वन, दिस सेल ऑफ, यू कैन सी सिंस लास्ट 3 days ये ऊपर 145 के ऊपर जा ही नहीं पा रही है, एंड सो मे बी गोइंग फॉरवर्ड दिस विल एक्ट लाइक अ वेरी गुड resistance, and we can be able to take. Bharat Forge is one of the companies जिसमें reversal आ सकती है very soon, and this is one of the companies जहाँ पे though it has been breaking 800 levels, I would keep a track of any move above 800, and I would try to enter this stock. ये ऑल टाइम हाई पे हमने इस कैंडल से हमने ट्रेड किया था, एंड देन इवेंचुअली इट वेंट आउट द रेडार बिकॉज इसमें कुछ ट्रेंड नहीं थी, लेकिन अभी जैसे दिख रही है कि ये जो डाउन ट्रेंड थी ये धीरे धीरे वीक हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग. Tech Mahindra gave a good move, but unfortunately the trend is getting weaker. Apollo Hospital gave a good move, and now it seems like हमने ये ट्रेड लिया था, हमने ये ट्रेड लिया था. So basically, but it seems like there can be a minor correction towards 3800. So we have to see, because ये जो moves होती हैं ये सब depend करती हैं कि how the Nifty and the market sentiment works. NAUKRI is a very good short trade, and this is something very good candle structure has formed. It was trying to move past this, and so maybe for now 5500 is a very strong resistance, and let's see if it is able to hold 5000 levels. And this is exactly, you can see it was in a downtrend. It tried to move for the last 3 sessions, and then you can see the next candle it tried to move, and then there was a huge profit booking or shorts were created, and then it broke this previous low, and now we have to see if it is able to hold 5000 levels. Similarly, Tata Motors, unfortunately there are shorts getting added, and it's coming in trend after this huge down. At least I was thinking of some reversal, but as soon as I mentioned the levels of 306, so 306 जब भी break हुआ, now it is near about 295 exactly. So already 3% move आ गई है इसमें. So, and it seems like there's more weakness left, and this is also Muthoot Finance gave us a move, but it seems like is not able to hold 1600 levels. This is also true for GLENMARK. So हमने कैडिला पहले देखा था, और अभी GLENMARK is also one of the companies जिसमें हम लोग weakness देख पा रहे हैं, and it seems like is more going towards if it's not able to hold 640 levels, so इसमें और weakness आ सकती है. Other than that, we have Indus Tower, which is a very good trading opportunity. यहाँ पे 220 levels पे ये जाके support ली है, लेकिन the trend is getting weaker, and so it seems like 240 would be a very stiff resistance to cross in the short term. Similarly, ICICI GI में ये move आई थी before result, and after result it was 4% down. और अभी हम देख सकते हैं कि इसमें शायद going forward there can be more sort of positions getting added in the short side. हम 1470 1450 region को देखेंगे. अगर वो region अगर violate होती है, so going forward there can be more weakness. लास्ट कंपनी जो हम लोग देख रहे हैं इज ट्रेंड. हमने ट्रेंड में ये ट्रेड लिया था, एंड द रीज़न वाज दिस पर्टिकुलर कैंडल. और यहाँ पे हमने प्री मार्केट ओपन वॉच में हम लोग इस दिन के रात को हम लोग स्टडी करके बोले थे कि दिस इज़ लुकिंग गुड इफ़ इट इज़ एबल टू टेक आउट दिस पर्टिकुलर 870 880 रीजन. हमने तब घुसा था, और ये 927-25 तक गई थी. मैं 924 में निकल गया. And the reason was pretty simple. You can see that towards 921-22 it always keeps on facing resistance, and this was one of the counters जहाँ पे हम देख रहे हैं कि it's always trying to come towards 900. It takes a support, and then it again reverses. So we have to also keep a track on trend. So folks, these are all the companies जो Nifty 50 के Nifty
कि FNO सेगमेंट में है, डेरिवेटिव सेगमेंट में है, और इनमें ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है. सो IGL, REC लिमिटेड, नौकरी, ग्लेनमार्क, ये बहुत अच्छे 4 काउंटर्स हैं. अदर देन द काउंटर्स विच हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विच आर वीक, लेकिन ये 4 पर्टिकुलर काउंटर्स हैं जिसमें पोजीशंस ऐसी बन रही हैं जिसमें और वीकनेस आ सकती हैं. और अदर देन दैट हमने जैसे देखा कि जस्ट टू सम इट अप ये पूरा वीडियो का, तो लाल पैथलैब, गुजरात गैस, AU बैंक, सनफार्मा, बाटा इंडिया, UBL, टोरेंट फार्मा, अल्केम, नैम इंडिया, McDowell और UBL, ये दोनों आप रेडार पे रखो. एंड टुगेदर विद दैट यू हैव केमिकल सेक्टर कंपनीज विच आर लाइक दीपक नाइट्रेट, आरती. नवीन फ्लोरिन का रिजल्ट आ रहा है इसलिए मैं नवीन फ्लोरिन को नहीं ले रहा हूँ. एंड दीज 2 कंपनीज, एंड टुगेदर विद दैट यू कैन सी दैट देयर इज ऑल्सो कंपनीज लाइक PI इंडस्ट्री, हेवल्स, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की है. So these are few of the companies जो मेरे radar पे रहेंगी. On the short side GLENMARK है, and on the long side I will try to see SUNPHARMA. दो SUNPHARMA का result भी next week आने वाली है, so maybe this is something which I wouldn't be looking at much. बहुत strong trend में है NMDC, और NMDC की news flow की वजह से है. So also this would be one of the counters जहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रेड ले सकते हैं. So this is all I have to present today. Hope this video is going to give you some information and about some particular counters जहाँ पे आप next week for the July expiry उसमें आप ट्रेड करके ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं. और as usual, thanks a lot for listening and best of luck with your trading. Yeah, bye bye.